Sri Kirinder is not only a stylish businessman, but a man who can be touched by the problems of the people around him, on the footpath, on the road, on the platforms. It's a rare gift in a person, and everybody in this country, I think they need them. Sometimes I feel, I would like to mention one incident in my life. I went to Amarnath in June, and I saw one boy, 22-year-old boy, standing with a gun. Almost 8,000 feet in Himalayas, bearing the cold, the hunger. There is no tea, no water, nothing. He's just there in Himalayas protecting the country and the people of this country. Those people should be the inspiration to our children, our generation here. With all my due apologies, not the IT, not the computers. The farmers, the military, and the police. The police were in the country, the military on the borders. There is a saying, military world, there should never be, we should hope that military should never enter the country. And police should safeguard. These three people who are very tough. When we cross a road, when we are driving a car, when a traffic policeman comes to us, and when we are breaking the rules, we just say ahead. We just don't know how tough his life is when he is standing in the rain, in the sun, in hot summer, and doing his job for the mere sake of 10,000, 15,000 rupees salary. When we would like to pay a lot of taxes to the government, we go to the international hotels, pubs, clubs, multiplex cinema halls, but we break the rules. See, this is the country. What the country needs is not selfishness. The country needs is somebody who is dedicated, not just being dedicated, but show your little bit of your heart and mind and consciousness to the other person or other animal on the way. That's more than enough. Thank you, Dr. Kiran, for having given a wonderful message to our people today. Now we are going to have the real ceremony of awarding the Sankalp Sanjeev Puraskar Award to Dr. Kiran Bedi. When I have been seeing your ma'am papers, I always had one question in my mind. Are you a woman first or a police officer? You are a tough woman, a woman of steel, not a man. Sometimes I feel she was sitting there and enjoying the students' programs. I could feel the beautiful, delicate tenderness behind a woman of steel. And you are not just steel, you are iron woman. And they are really happy and glad to have a person like you, and our Sankalp Sanjeev Puraskar Award is really honored to be given to you, a distinguished personality like you, because sometimes the awards get higher and higher with the persons who are being awarded, not like our Padma Shris or Padma Vibhushans. I would like to request the organizers to arrange the felicitation for Dr. Kiran Bedi. While we do this, we would like to have little details which we know, but we'd still like to know them again. We can start the change from our own homes, neighborhoods, bastis, villages and schools. People who do not take charge of their lives are lathi charged by time. This was said by Kiran Bedi. Yes, if you don't take charge of your life, this is a police in that woman who is speaking. So, ma'am, please take the seat and give us honor of being felicitated with Sankalp Sanjeev Puraskar Award. Kiran Bedi has been India's first and highest ranking officer who joined the Indian Police Service in 1972. 30 years of expertise. Om Bhadram Karne Vishnudayana Deva Bhadram Vasne
सममिदं जगते पुरेण चन्द्रश्चेर्यश्चेर्न पुरं प्रजापते प्रेतवदिष्टे भुवनवदिष्टे देववदिष्टे सदावदिष्टे ब्रह्मवदिष्टे सत्यवदिष्टे ब्रह्माणमेवभस्मरहम् प्रजादेव Prestigious Raman Magsaysay Award, which is also called as the Asian Nobel Prize. Happy and glad once again to have you here. Now, these children must be privileged to get a bouquet from Dr. Kiran Bedi. This is the check awarded to Dr. Kiran Bedi from Lion Dr. Y. Kiran on behalf of Suchit India Foundation. This is only a token of our. So now we are going to have the much awaited message. I don't like to call it a speech, but a much awaited message from a legend, a woman, and also a police officer in this country who has proved around her. She still made herself successful. Please, ma'am, please give us some valuable words. Thank you very much. Lion Kiran, Suchit India, संकल्प दिवस, मेरे बहनों और भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने लायन भाई का बहुत धन्यवाद करती हूँ। मुझे बहुत देर के बाद ऐसा व्यक्ति मिला, बहुत देर के after a long time I've seen such a wonderful heart, such a rich heart. इतना अमीर दिल बहुत देर के बाद देखा है। इतना बड़ा दिल, इतना प्रेम वाला दिल, इतना दया वाला दिल, और वो भी आदमी में। आदमी में दिल ऐसा नहीं दिखता है। बहुत देर के बाद I've seen such a loving heart in a man. बहुत देर के बाद एक आदमी में। हम लोगों का तो प्यार है ही, हम तो माँ है ना, माँ है, बहन है, तो प्यार है ना, लेकिन आदमी में प्यार होना बहुत मुश्किल है। ये बहुत देर के बाद देखा, बहुत अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगा।
मैं खुद नहीं आई हूं यहाँ, मैं नहीं हूं, मुझे मेरी बहन ने भेजा है। मेरी बहन पिछले साल कैंसर की वजह से चली गई। वो दुनिया की लीडिंग क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट थी मेंटल चैलेंजेस पर, दुनिया की। उसका नाम है रीता पेशावरिया। वो आपके नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मेंटली रिटार्ड में काम करती थी। वहां इधर नेशनल इंस्टीट्यूट शी यूज्ड टू वर्क एज अ लीड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट इन द नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द मेंटली हैंडिकैप्ड इन मनपल्ली। Her husband, my brother-in-law, was the director of the institute of the National Institute for the Mentally Handicapped. मैं उस परिवार के साथ जुड़ी हूँ जो सारा परिवार अपना सारा जीवन इन बच्चों के लिए दे गया। मैं उसके लिए आई हूँ। मुझे तो मालूम नहीं था आपने मुझे किस लिए बुलाया, लेकिन मेरी बहन ने मुझे भेजा है आपके पास ताकि उसका काम, उसका सेवा चलती रहे। She sent me to continue her good work and her service. Therefore, you have not honored me, you honored the work which she, my brother-in-law, husband, and the entire team. She has students all over the world. उसके स्टूडेंट सारी दुनिया में हैं और उसका एक स्टूडेंट ने यहाँ पर एक संस्था खोली हुई है, वो मुझे मिलने आई और वो काम जारी है। आप ये काम आगे कर रहे हैं, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। भगवान आपको बहुत बहुत दे तरक्की, भगवान आपको बहुत दे ताकि आप बहुत करें। हम लोग सब प्रार्थना करते हैं, सब हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं। बहुत हाथ जोड़ो और ईश्वर से प्रार्थना करो ऐसे व्यक्ति को भगवान बहुत दे ताकि ये भी बहुत दे, ये देता रहे, ये भगवान इसको देता रहे और ये आगे सेवा करता रहे। हम सब लोग हाथ जोड़ के ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हम आशीर्वाद देते हैं, हम दिल से प्रार्थना करते हैं ऐसे व्यक्ति को भगवान ऐसे व्यक्ति और बनाए हमारे देश में, और इसको खूब God may give him so much that he may give more and more to the society. We need more like him. We need more like Lion Kiran's here. We need, these are the kind of Indians who are making India so safe and better. I'm so joyous for all of them. I want to thank the entire City of India which is supporting this movement, the Sankalp movement. आपने जो मुझे इनाम दिया है, मैं आगे अपनी संस्था को जो प्रिजनर्स के बच्चों को पढ़ाती है उसको भेंट करूंगी ताकि उनकी भी पढ़ाई आगे चलती रहे। This award will be donated to the India Vision Foundation. If you make the check, don't make the check in my name. Make the check in the name of India Vision Foundation, so it goes for the education of prisoners' children. I want to really thank you. साथियों, जीवन में हम लोग सब जीवन में कुछ करने आए हैं। भगवान ने हमें कुछ करने के लिए भेजा, हमको सिर्फ ढूंढना है इसलिए भेजा, हमको सबको ढूंढना है। भगवान ने हमें जानवर क्यों नहीं बनाया, हमें कुत्ता बिल्ली क्यों नहीं बनाया, हमें वो मच्छर क्यों नहीं बनाया? वो भी तो जीवन, वो भी तो जीवन है, लेकिन हमको कुत्ता बिल्ली क्यों नहीं बनाया? हमको भगवान ने जानवर क्यों नहीं बनाया? हमको इंसान क्यों बनाया? ये प्रश्न पूछना बहुत जरूरी है। और जितना हम लोग, the more we ask this question, why has God sent me as a human being? Why hasn't God sent me as a mosquito, as a rat, as any other animal who is dependent sometimes on others? Why? मुझे भगवान ने इंसान क्यों भेजा? जब जवाब ये ढूंढने लग जाओगे तो आपको जवाब मिलने लग जाएगा। ऐसे इंसान बनने के लिए भेजा, to become like him बनाया। He recognized it. He's recognized it. हम उस लगता है वो भगवान कहता है बांटो, लोगों की सेवा करो। When God gives you more, it is for a purpose, to give, to distribute and to spread happiness. This is what मैंने भी देखा। मुझे भगवान ने पुलिस ऑफिसर क्यों बनाया? मुझे भगवान ने इतने अच्छे पेरेंट्स क्यों दिए? मुझे भगवान ने इतनी अच्छी पढ़ाई क्यों दी? मुझे भगवान ने तंदुरुस्ती क्यों दी? इतनी अच्छी तंदुरुस्ती ऊपर से लेकर नीचे तक सब कुछ दिया, आंखें दी, सब कुछ दिया, 5 सेंसेस दिए, तंदुरुस्ती दी, खाना हजम करने के लिए तंदुरुस्ती दी, सोने के लिए नींद दी, चलने के लिए टांगे दी, सुनने के लिए कान दिए, देखने के लिए आंख दिया, सोचने के लिए दिमाग दिया। क्यों दिया?
नहीं दिया, दूसरों को कम दिया, मुझे पूरा क्यों दिया? मैं पूछती थी, I used to ask, why have I got everything? Then the answer came, grow up to give. बड़े होके कुछ इंसान बनो, जाके आप और बांटो, सेवा करो, न्याय करो, अच्छा करो, सेवा करो, अच्छा। ये माँ बाप की शिक्षा थी, ये मेरे माँ बाप की शिक्षा थी, ये मेरे स्कूल की शिक्षा थी कि तुमको भगवान ने सब कुछ दिया ताकि तुम सब कुछ लोगों की सेवा कर सको, न्याय कर सको, खुशियां बांट सको। मुझे पुलिस ऑफिसर क्यों बनाया? ताकि तुम न्याय कर सको, किसी से डरो नहीं, किसी से घबराओ नहीं, किसी से छल कपट नहीं, न्याय करो, सेवा करो। Go and serve the community. That is what the message was from my heart. How much do I need? I already have that little I need. I don't need anything more. It is that more is all to give. So this is the message of today. Here he is an example. Here he is an example for us. Here is this one man, Dr. Kiran, is an example for us. हमको सबके पास कुछ देने को है, ऐसा नहीं है किसी के पास ज्यादा, तो समय है, स्किल है, नहीं है तो कुछ जान, कोई स्किल है, कोई समझदारी है, कोई क्राफ्ट है, जैसे बांट सकते हो बांटो। अरे और कुछ भी नहीं है, अच्छे शब्द है, खुशी बांटो, कुछ अच्छे शब्द है तो खुशी बांटो, हाथ है तो सेवा करो, जुबान है तो सेवा करो, अच्छे शब्द बोलो। दिस इज व्हाट गॉड गिव्स यू। गॉड गिव्स यू टाइम फॉर व्हाट? गॉड गिव्स एवरीबॉडी टाइम। जब मैं जेल में काम करती थी तब अपने कैदियों को कहती थी, तुम्हारे और मेरे में कोई फर्क नहीं है, फर्क कुछ नहीं है। भगवान तुमको क्राइम के बाद भी 24 घंटे दे रहा है, मुझे काम करने के बाद भी 24 घंटे देता है, मुझे 48 घंटे नहीं देता है, मुझे भी एक दिन ही देता है, एक नया दिन एक और, तुम्हें भी एक दिन देता है। फर्क दोनों में यह है, ऐसे व्यक्तियों में वो हर दिन सेवा करते हैं और हम लोग सिर्फ एक दिन खाते हैं, खर्चते हैं और दूसरे के साथ छल कपट करते हैं। दोनों में फर्क सिर्फ ये है, वो दिन कमाता है, हम कई में से 2 दिन खर्चते हैं। वो हम खर्चते हैं, वो कमाता है दूसरों को देने के लिए। ये फर्क और कुछ फर्क नहीं है। हमको भगवान ने सबको बराबर बनाया है, सिर्फ ये समझ जो है ना वो अलग अलग करती है। जिस दिन ये समझ आ जाएगी कि हमको भी भगवान ने कुछ करने के लिए भेजा है, दूसरों के काम आने के लिए भेजा है, अच्छाई के लिए भेजा है, देखो दूसरा जन्म तो होगा, मैं ऐसा विश्वास करती हूँ। We will be reborn. We will all be reborn. Why? You might say, evidence कहाँ है कि reborn? Evidence? क्या evidence चाहिए? हम हर एक के माँ बाप अलग अलग क्यों हैं? हम हर एक की स्थिति अलग अलग क्यों है? This is a product of our past deeds. इन्होंने पहले अच्छे कर्म किए हैं, इसीलिए इनको इतना कुछ मिला है, और कर्म करेंगे और आगे आगे जन्म तो दोबारा होगा। तो क्या भगवान बुद्ध कोई नहीं बना? कोई भगवान बुद्ध नहीं बना है, कर्मों से ही बनेगा। ये उसकी रास्ते पे चल रहे हैं, त्याग के रास्ते पे चल रहे हैं। मैं ये कहूंगी, अपने में भगवान बुद्ध ढूंढो, अपने में अच्छा इंसान ढूंढो और ढूंढ के ये देखो मेरे पास एक्स्ट्रा क्या है जो मैं बांट सकता हूँ। Ask yourself, what is it that I can share by which I can make the surrounding better? इसका कोई सीक्रेट नहीं है, सीक्रेट आज आपने खुला देख लिया है। इसलिए जो भी मुझे मिलता है वो सब अब सरप्लस है, वो एक्स्ट्रा है, वो सब बढ़ता है और जितना बढ़ता है और आता है, जितना दोगे उतना आएगा। ये कुदरत का नियम है। Understand the laws of nature. Law of nature says the more you give, the more you get, and the more you get, the more you give. It's a very positive cycle. So therefore, I want to thank you. May you be blessed. May you strengthen his hands. Go and tell him, you are doing this good work. This is our contribution. Go and give it to him. Don't say, हमारा नाम तो हुआ नहीं, हम क्यों दे तुम्हें? भगवान के घर में लिखा गया है, God is watching. When you do a good deed, भगवान के नाम में लिखा, इसीलिए वापस जन्म में जब आओगे वो कर्मों का बैंक अकाउंट है। हम लोग सोचते हैं पैसे का ही बैंक अकाउंट है, एक और बैंक अकाउंट होता है, वो है कर्मों का।
good deeds का. If we go for good deeds bank account, we will come back like him. He has come back after good deeds. That is his secret. And you know what? He is adding more good deeds to come back to do more and do more and do more. Till God says no more. अब और नहीं चाहिए, बहुत कर लिया काम. होगा ही. तो एक बैंक अकाउंट ऑफ गुड डीड्स बनाएं. जहां पर भी है, जो भी है, सोचो जहां भी हम अच्छा कर सकते हैं, अच्छा बोल सकते हैं, हम करें. मैं आपका बहुत धन्यवाद करती हूँ. आपने मुझे इतना मान दिया, प्रेम दिया. मैं आशा करती हूँ कि डॉक्टर लायन किरण और किरण मिलकर और काम करेंगे और इनको मैं नॉर्थ इंडिया में भी ले जाऊंगी कुछ और काम के लिए, ताकि इनका नाम नॉर्थ इंडिया में भी हो, ताकि लोगों को, नॉर्थ इंडिया के लोगों को पता चले ऐसा एक सब इंडियन आंध्राइट इतना सुंदर आदमी इतना बढ़िया काम करता है. हम लोग मिलकर काम करेंगे बहन भाई जैसे. ये छोटा भाई, मैं बड़ी बहन, हम ऐसे काम करेंगे जिसमें हम लोग इनको भी वहां ले जाएंगे और सेवा के साथ जुड़ेंगे. आपका बहुत धन्यवाद. मैंने आपको कहा है मैं अपने लिए नहीं आई हूँ, मैं अपनी बहन की याद में आई हूँ. उसका नाम है रीता पिशावरिया, जिसने हजारों स्टूडेंट्स को मेंटल डिसेबिलिटी में, ऑटिज्म में बहुत अच्छी तरह पढ़ाया, बहुत अच्छी तरह पढ़ाया. दुनिया भर के मेरे स्टूडेंट्स हैं. उसे लैंकेशायर यूनिवर्सिटी इंग्लैंड में भी बहुत इस कॉज को प्रमोट किया. भगवान ने उसको जल्दी ले गया. मेरे से 2 साल छोटी थी, बहुत सुंदर आत्मा थी, लेकिन भगवान को पसंद थी, वो चली गई. मेरा काम है कि उसकी सेवा, उसकी सोच, उसका काम, सब कुछ उसका आगे चले ताकि लोगों का और भला हो. ऐसा मेरा सपना है. मैं इसका, जब मैं जाऊंगी जिंदगी से, मैं भी जब अपनी वसीयत में लिख के जाऊंगी कि मेरी जितनी भी बुक की रॉयल्टीज हैं, मेरे पास अभी 5 बुक्स हैं जिसकी आमदन आती है मेरी संस्था को, इंडिया विजन फाउंडेशन को. वह इंडिया विजन फाउंडेशन की संस्था मेंटल डिसेबिलिटी के लिए डोनेटेड रहेगी ताकि हमेशा हमेशा उसका काम चलता रहेगा और उसके लिए पैसा उस संस्था और किताबों से आता रहेगा. ऐसा मेरा सपना है. इसलिए मैं आपके काम से जुड़ी हुई हूँ. ये उसका कार्य है, क्योंकि जब तक जिंदा थी मुझे कोई चिंता नहीं थी, लेकिन उसके जाने के बाद आपके यहाँ कल बेंगलोर में भी यही प्रोग्राम ऐसा है, मेंटल डिसेबिलिटी पर ही है. पता नहीं जब से वो गई है मेरे फंक्शन में मेंटल डिसेबिलिटी और चैलेंजेस, मेंटल चैलेंजेस सारे जुड़ते जा रहे हैं. मालूम नहीं आत्मा मुझे भेजती सेवा करने की. आपका धन्यवाद. आपसे प्रार्थना है आप ऐसे व्यक्ति के साथ जुड़ो और आंध्रा को एक मॉडल आंध्रा, एक मॉडल स्टेट बनाओ. जैसे ये गांव-गांव को अडॉप्ट करता है, आप भी ऐसे इंस्टीट्यूशंस को अडॉप्ट करो. ऐसे मेंटल डिसेबिलिटी चैलेंजेस की, चाहे वो फिजिकल डिसेबिलिटी है, चाहे वो मेंटल डिसेबिलिटी, कोई भी है, डिसेबिलिटी से करो. भगवान का धन्यवाद करते, भगवान ने तूने मुझे सब कुछ दिया है, मेरे से काम लेते रहना, सेवा लेते रहना भगवान, ताकि मैं दूसरों के काम आता रहूं. आपका सबका बहुत धन्यवाद. The parents will come together and do a lot of service to this country, and you are really a born leader, and this country needs leaders now at this desperate moment. We are in a crisis, and I hope people like you will show way or path to the citizens of this country. Now I would like to take a little bit of your time, ma'am. We are going to distribute regular certain donations to all these children, the institutions from Suchar India Foundation. You already know that CEO Dr. Layan Kiran, he's been doing a lot of service, and from both of you, please give this utilities to these institutions. First, the Bal Vikas and Teaching Aids Friends, and the person who is doing the service is Mr. Srinivas Rao. Mr. Srinivas Rao. I kindly request all the audience to be seated for a few more minutes. I think this program should be an inspiration to our people. Let us not forget what Dr. Kiran Bedi just now has said few moments ago. Suchar India has been supporting this institute since a decade. Bal Vikas. At least the inspiring words Dr. Kiran Bedi has given us will work on our minds, and it will inspire to do some little bit service actions. Kindly be seated. Let us share this moment of joy and service with both
The Kirans, located at Malapet, Hyderabad, having a strength of 100. And they all are having mentally challenged children. And this institution, Prerana, has been doing service for the past 15 years. And the person who is in charge and doing a lot of service to these kids is Mrs. Vijayalakshmi. మనకి హిందూయిజంలో ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంది, ధర్మం రక్షతి రక్షిత. మనం ఏ ధర్మాన్ని అయితే కాపాడుతామో ఆ ధర్మం మనని రక్షిస్తుంది. ఇందాక కిరణ్ బేడి గారు ఒక మంచి మాట చెప్పారు. మనం ఎవరైనా హియర్ ఆర్ మోస్ట్లీ disabled and mentally challenged. They have been doing service for the past 40. The person who is doing this seva here is Mrs. Shanti Venkat. Mrs. Shanti Venkat. Please give them a very big hand. Please give them a very big hand. Social Media Foundation is also supporting this institution for the past decade. మన జీవితాల్లో కొంచెమైనా సమయం మన రోజులోని ఒక గంట అయినా దాదాపుగా 140 మంది స్టూడెంట్స్కి ఈ పిల్లలందరినీ ట్రైన్ చేసి, మెంటల్లీ ఛాలెంజ్డ్ పిల్లలందరినీ కూడా ట్రైన్ చేసి వాళ్ళకు ఒక జీవితంలో ఒక మార్గాన్ని చూపెడుతున్నారు. మేడం Suchir India and Suchir India Foundation is supporting this institution for over the decade. మేడం We have to learn from Dr. Kiran Bedi how much patience and interest she has got. She is conversing with all, and all of them are mentally disabled children, and they are serving in this institution. This institution is serving the children for the past 20 years. Mrs. Tasleem, she is in charge. I think the cultural program which was performed earlier by one of her students. She is coming from Renigunta. It's a wonderful performance, Ms. Tasleem. You are doing a wonderful job. If I remember, I think it was Madan Kumar who was doing Pavan Kalyan's song. From the same institution, yes. hello sir. And Suchir India Foundation is supporting this institution for the past decade. They must. అభినందన భవానీ గారు మాకు చాలా ఫెమిలియర్ ఫేస్. హైదరాబాద్ కల్చరల్ కూడా తన అప్నాఘర్ నుంచి చేశారు. కొత్తపేటలో ఉండి స్ట్రెంత్ ఆల్మోస్ట్ 50 మంది ఉన్నారు, 50 మంది స్టూడెంట్స్. వీళ్ళందరూ చెప్పుకోవాలని బాధగా ఉంటుంది, కానీ వీళ్ళందరూ అనాథలు. కానీ నాకు తెలిసి కిరణ్ గారు లాంటి తండ్రి వాళ్లకు ఉండగా వాళ్ళు ఎప్పుడూ అనాథలు కారు. వాళ్ళకి ఆ ఫీలింగ్ కూడా ఉండకూడదు. అభినందన భవానీ గారు, మీకు నిజంగా మా అభినందనలు. ఇంత మంచి రావు గారు ఇన్ దిస్ ఇన్స్టిట్యూషన్ సాధనా సొసైటీ ఫర్ దిస్ చిల్డ్రన్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ సుచిర్ ఇండియా ఫౌండేషన్ అండ్ డాక్టర్ లయన్ వై కిరణ్. Advocate. Really, thanks that చాలా చిన్న పదం అనిపిస్తుంది. Really, we are very much happy, sir. I don't know how to convey this happiness in terms of words. We came all the way from Tirupati, Abhay Kshetram. Past 6 years, Mr. Kiran is supporting our institution. I don't have any words. Every time, every year, he is giving medicines to all our 152 orphan physically and mentally challenged children. He is giving medicines because medicine is the main life to this, especially for these epilepsy children, and he is supplying whole year. So really, on behalf of all our students, I again special thanks to you, sir.
Food can give anyone, but medicines giving in time, that too regularly, yearly, is amazing thing. I'm so happy, sir. Actually, today is a happy birthday of Mr. Kiran Garu. So our children would like to give a small song. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Many greetings to you. Many greetings to you. Many greetings, many greetings. Many greetings to you. Happy long life to you. Happy long life to you. Happy long life, happy long life. Happy long life to you. థ్యాంక్ యూ మిస్ తస్లిం. ఈ పిల్లల విషెస్ లయన్ కిరణ్ గారు మీకు Not only ఇంకా 3 children wishes from all over the world. Thank you, Andy. Thank you so much. And I can say only one word because both the eminent personalities are the same name. So I can say KIRAN. K stands for kind in heart. The I stands for intelligent personality. And R stands for the role model in the society. A stands for active, attractive personality. And N stands for noble persons in the future generations. This is what I can say. And you are proving all your words, sir. I'm so happy and happy. Thank you so much.